blooming with natural prosperity, preserved cultural heritage, and moving towards progress, Himachal Pradesh. The region, which has an agriculture-based economy, is currently facing impacts of climate change. Due to the traditional way of farming, productivity is also decreasing. But the growers of Sairaj Valley are an exception to this. Overcoming these crises, they are farming for profit. So let's see the story of their transformation. Parivartan. This is the story of 61 villages of 5 Gram Panchayats in Sairaj block of Mandi, Himachal Pradesh. These farmers, who mainly grow apples and vegetables, needed modern agricultural support along with the management of crop processing and marketing. For this work, HDFC Bank's focused development program took initiative, and the responsibility of implementation was taken by the Sanjeevani Vikas Evam Jan Kalyan Samiti. Exposure visits were organized for practical and shared learning on advanced farming techniques. By adopting appropriate schedules and doses for fertilizers and pesticides and the modern cultivation methods, the farmers have reduced input cost and increased income by up to 30%. HDFC CSR की ओर से हमें जो पंप प्रदान किया गया, इससे हम थोड़े से समय में ज़्यादा स्प्रे कर सकते हैं और इससे हमारा टाइम भी बचता है और हम बड़े बड़े सेब के पौधों के लिए भी इससे स्प्रे कर सकते हैं। हमारी गोभी की फसल पहले ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक होती थी। अब यह पता चला कि हमें इसके लिए क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, खाद या कुछ उसकी जानकारी हुई तो इससे हमें प्रॉफिट हो गया। अब 20-25 हज़ार प्राप्त हो रहा है। HDFC बैंक संजीवनी संस्थान की तरफ से हमें जो पोलियोस लगाने की मदद की हुई है, उससे हम अब आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले हमारे जिस खेत से 5 से 10 हज़ार का फायदा होता था, उसी खेत से हमारे को 20 से 25 हज़ार फायदा हो रहा है। The entire area is known for its tasty and crunchy apples. But in recent years, the farmers are facing losses caused by uncertainty of climate, inadequate water facilities, lack of technology, and insufficient knowledge about the market. In order to solve these problems, HDFC Bank and Sanjeevani took the initiative to help the farmers. Thus, the Himachal Farmers Producer Cooperative Society Limited came into existence by bringing farmers together. The members of this FPO are receiving training starting from crop cultivation and management to marketing. To help the farmers in grading and sorting apples manually, which is time-taking, the FPO has initiated the business of an automatic grading machine. The members of the FPO grade their apples in this grading machine at the comparatively lower price than other grading machines in the area. The apples are clean and are then packed and marketed to the let farmers achieve their better prices in the market. पहले अपने सेबों को जो दलालों को बेचते थे, उसके मार्केट में हमारे को 1100 के करीब रेट मिलता था। इस बार हमने अपने FPO के माध्यम से ग्रेडिंग किया, पैकिंग किया, काफ़ी अच्छा हमारे को रेट मिला। कम से कम 1500-1700 के करीब हमने अपने सेब को बेचा। Considering the difficulties related to getting direct money for C-grade apples, a plant has been set up to process C-grade apples. Here, local farmers are being trained to operate the unit to make the initiative more sustainable. Today, the farmers themselves are running the plant with confidence. जिसका किसानों को एक अच्छा दाम नहीं मिल पाता है, उस C-grade सेब को हम अपनी स्थापित इकाई में ले जाकर उसका बाय प्रोडक्ट बनाकर किसानों को एक अच्छा मुनाफा देते हैं। Various products from apples like concentrated juice, ready-to-drink juice, jam and cider vinegar are being processed. The FPO is not only solving the problems of the farmers but also helping in their economic upliftment. हमारे साथ 2000 किसान जुड़े हैं। यह इस क्षेत्र की पहली FPO है जो किसानों द्वारा किसानों के हित के लिए चलाई जा रही है। इनपुट कॉस्ट को कम करते हुए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हुए हम उनका प्रॉफिट बढ़ाएं। जैसे यहाँ पे मिडलमैन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, उसको लेकर संस्था ने काम किया है और डायरेक्ट फार्मर्स को जो मार्केट है उसके साथ लिंक करवाया है कि कैसे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। Moving towards self-reliance, which is making the farmers capable of relying on their own efforts and abilities. This region is slowly becoming economically independent while preserving its natural richness and cultural heritage.